गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को सॉल्व करते जा रहे हैं और टारगेट है 3 महीने का। इस 3 महीने में अधिकांश प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। पहला प्रश्न इकोनॉमिक सेक्शन से है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए टाइट बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी सिचुएशन इम्पैक्ट कंज्यूमर। जो टाइट बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है जो कठोर नीतियां अपनाता है, वो किस प्रकार से लिक्विडिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है कंज्यूमर के लिए, क्या प्रभाव डालता है। इट कुड लीड टू अ राइज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इल्ड्स। इससे सरकार का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके इल्ड बढ़ जाएंगे। इट कुड लीड टू द राइज इन इंटरेस्ट रेट्स फॉर द कंज्यूमर। स्वाभाविक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो है डिफरेंट टाइप्स के जो बैंक रेट्स होती है उसको अधिक कर देती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो, या फिर एसएलआर हो, सीआरआर हो, या ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, या फिर जिसके भी तहत इंटरेस्ट रेट को राइज करती है। और दूसरा बात है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो लोन महंगा हो जाता है, और जब लोन महंगा हो जाता है तो कंपनियों के पास विकल्प कम होता है, वो बचती है लोन लेने से, तो इन्वेस्टमेंट पे प्रभाव पड़ता है। इससे मार्केट जो होता है वो स्लो में चला जाता है, और मार्केट से एक तरह से लोगों का विश्वास उठने लगता है। तो सरकार का यहाँ पर रोल अहम हो जाता है। तो सरकार के जो बॉन्ड है जो ज़्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि मार्केट तो खस्ता हाल है, तो लोग जो है ना सरकारी बॉन्ड में निवेश करना स्टार्ट करते हैं। अर्थात जैसे सरकारी बॉन्ड की कीमत बढ़ने लगती है, उसका बॉन्ड यील्ड क्या होता है, गिरने लगता है। तो सरकारी बॉन्ड, तो पहला स्टेटमेंट समझ गया। आई थिंक यू गॉट द आंसर। मेरा एक्सप्लेनेशन सी है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर करेक्ट खोजना गया था। तो बॉन्ड यील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा सरकारी। हाउ कैन टाइट लिक्विडिटी कंडीशन इम्पैक्ट कंज्यूमर्स। A tight liquidity condition could lead to a rise in the government securities. Rise in government securities yields. ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्ड को बढ़ा देगा, एंड सब्सिक्वेंटली लीड टू द राइज इन द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द कंज्यूमर टू। और इससे क्या होगा ना, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, सरकारी बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड का यील्ड अगर बढ़ेगा तो उसकी कीमत गिरेगी ना। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शेयर बायबैक। It is a mechanism through which a listed company buys back shares from the market. Both individuals investor and retail investor या shareholders take part in the buyback offer. It can be done only through the open market purchase. No, it's a 2 and 3. Absolutely incorrect. 1 and 2. Buyback buyback is a mechanism through which a listed company, ध्यान रहे, listed company buy back share from the market. It can be done either through open market purchase or through the tender offer route. Under the open market mechanism, the company buys back the shares from the secondary market, while under the tender offer, shareholders can tender their shares during the buyback offer. In a tender offer, the company fixes a fixed price for the buyback, and the investor can tender their share by placing a bid with the broker. Both institutional investor and retail shareholders take part in the buyback offer. Consider the following statement regarding World Trade Organization. World Trade Organization is the only global international organization dealing
with the rules of trade between nations. It officially commenced operation on January 1995 under the Marcus Agreement. After WTO came into the existence, General Agreement on Trade and Tariffs ceased to exist. No, 1 and 2 is correct. World Trade Organization WTO is the only global international organization dealing with the rules of the trade and between the nations. World Trade Organization as an institution was established in 1995. It was a plus General Agreement on Trade and Tariffs GATT, which was in place since 1946. The WTO officially commenced 1 January 1995 under the Marcus Agreement, signed 123 nations April 1994. India has been a member of the GATT since 1948. Hence, it was the party to Uruguay round. Hence, it was party to Uruguay round, a founding member of WTO. While WTO came into the existence in 1995, GATT did not cease to exist. It continues as a WTO umbrella treaty for trade in goods. Recently, RBI indicated that it will soon commence limited pilot launch for e-rupee or central bank digital currency CBDC. क्या है ये CBDC? E-rupee is the same as a fiat currency and is exchangeable one to one with the fiat currency. It can be accepted as a medium of payment, legal tender, and a safe store of value. It is digital rupee would appear as an asset on a central bank's balance sheet. सभी के सभी सही है, लेकिन 1 and 2 सही है. E-rupee is the same as a fiat currency and it is exchangeable one to one with the fiat currency. Only its form is different. It can be accepted as a medium of payment, legal tender, and safe store value. Digital rupee would appear as a liability, not asset. It's a liability on a central bank's balance sheet. ये liability होगी, ठीक है? ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर दो. Recently, RBI indicated that it will soon commence limited pilot launches of e-rupee or central bank digital currency. What are the advantage of e-rupee? Reduction in operational cost involved in physical cash management. छापा छपाई करना पूर्ण सब में तो लगेगा ही पैसा नहीं. अब फिनेंशियल इंक्लूजन होगा, एड एफिशिएंसी टू द सेटलमेंट सिस्टम, बूस्ट इनोवेशन इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स स्पेस. ऑफ कोर्स सबके सब. What are the advantage of e-rupee? RBI said the key motivations for exploring the issuance of CBDC in India, among others, include reduction in operational cost involved in physical cash management, fostering financial inclusion, bringing resilience, efficiency, and innovation in the payment system. It will aid efficiency to the settlement system and boost innovation in the cross-border payments space and provide the public with the uses that any private virtual currency can provide without the associated risk. Consider the following statement regarding neobank. Sometimes news, neobank. Neobanks are a financial institution with only an online presence and function digitally. Neobanks have to apply for a banking license with RBI. Neobanks offer banking services like saving accounts, small loans, debit cards, which are the correct. Neobanks के बारे में आपको अगर जानकारी है तो केवल और केवल डिजिटल क्यों होगा? ये सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए. 1 और 3 सही है, फिर भी समझे, 2 गलत है. न्यू बैंक्स आर द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ध्यान रहे, ओनली एन ऑनलाइन प्रेजेंस, ओनली एन ऑनलाइन प्रेजेंस.
एंड फंक्शन डिजिटली। नियो बैंक केवल और केवल ऑनलाइन में काम करेगा, फंक्शन डिजिटली रूप से होगा। दे ऑफर ऑल ट्रेडिशनल बैंक सर्विसेज वाया डिजिटल सेटअप। बैंक के सारे काम होगा इसके द्वारा, लेकिन सब के सब डिजिटल रूप से होगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, विदाउट हैविंग एनी फिजिकल ब्रांच। There are 100%. These are called 100% digital banks. They cannot apply for a banking license. They cannot apply for a banking license. इसके लिए आपको बैंकिंग लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है. The expertise of these new banks lies in trying technology and artificial intelligence together to offer personalized financial services to the customer. It is offered at the minimal cost. Neobanks offer limited products like saving accounts, small loans, debit cards, not all services of the bank. Okay, neobank सब कुछ नहीं, सिर्फ स्मॉल लोन्स देगा, डेबिट कार्ड दे सकता है, सब प्रकार के सर्विस नहीं देगा। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भारत को सौंपा है। डिजिटल बैंकिंग products and services offered by digital banking units are, ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कौन कौन है? फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिजिटल यूनिट्स आर, ये डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन कौन होंगे? तो फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड्स, यूपीआई क्यूआर कोड्स। इस तरह के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले रहेंगे भैया। एज पर दी आरबीआई, each DBU, डिजिटल बैंक यूनिट, मस्ट ऑफर सर्टेन मिनिमम डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जितने भी डीबीयू खुलेंगे उसको कुछ मिनिमम डिजिटल बैंकिंग तो काम करने पड़ेंगे। दी सर्विस इंक्लूड्स, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट्स अंडर द वेरियस स्कीम खोलना पड़ेगा, करेंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डिजिटल किट्स फॉर कस्टमर, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड फैसिलिटीज, credit card facilities, mass transit system cards, digital kits for merchants, UPR codes, Bhim Aadhaar, and point of sales. Other services including making application for and onboarding customers for identified retail, MSME or schematic, systematic कहे या schematic loans. This may also include into in digital processing of such loans, starting from online application to dispersal, and identified government-sponsored scheme that are covered under the national portal. Which of the following committees are related to RBI surplus transfer? कौन कौन कमेटी है यार? मालेगाम तो है ही है। चलिए तीन तो यार, बीमल जलान की कोई बात नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता है। विवेक देवराय कमेटी तो है ही नहीं। वैसे है क्या? आरबीआई यूज टू कीप मेजर चंक ऑफ दिस सरप्लस। आरबीआई के पास मेजर चंक ऑफ सरप्लस होता है फॉर इट्स कंटिंजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड। हाउएवर, आफ्टर द मालेगाम कमिटी, 2013 में मालेगाम कमिटी आया था, रिकमेंडेशन ने कहा कि इट्स ट्रांसफर ऑफ सरप्लस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेटर उसके बाद बीमल जलान कमिटी प्रोवाइडेड ए रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड ए रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क provides a methodology for determining the appropriate level of risk provisions and profit distribution to be made under the section 47 of the RBI Act 1934. Consider the following statement regarding international monetary IMFC के बारे में पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC के बारे में। IMFC advise and report the IMF to the IMF board of the governors and the supervisions and management of the international monetary and financial system. Size and the composition of IMFC mirrors that of the executive board of the IMF.
The IMF operates by consensus, including on the selection of its chair. बिल्कुल नहीं, डी के डी सब सही है. IMFC advise the reports advises IMFC advises and reports to the IMF board of the governor on the supervision and the management of the international monetary and financial system, including on response to unfolding events that may disrupt the system. Although the IMFC has no formal decision making powers, ठीक है, इसके पास कोई मतलब फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है. It has become a key instrument for providing strategic direction to work and policy of the fund. Size and the composition of IMFC mirrors that the executive board. IMFC has 24 members who are the central bank governor, minister, or other comparable rank. IMFC operates by consensus. IMFC जो है वो मतलब एक तरह से बहुमत के आधार पे काम, कंसेंसस बेस पे काम करता है, इंक्लूडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ इट्स चेयरमैन. A number of international institutions, including the World Bank, participate as overseas in the IMFC. Consider the following statements. Reserve Bank of India Act 1934 gives RBI the sole right to issue bank notes in India. आरबीआई को सोल राइट दे दिया गया बैंक इशू करने का, बैंक नोट इशू करने का अधिकार 1934 के तहत. एनी चेंज इन द डिजाइन ऑफ करेंसी नोट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. RBI's Department of Currency Management, headed by the RBI Governor, has the responsibility of administering the core function of the currency management. तीन तो जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन आरबीआई का गवर्नर है कि कोई और है, सोचो. तो सोल राइट बिल्कुल नहीं, सोल राइट ही दिया गया उसको. चेंज इन द डिजाइन एंड फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स, किस प्रकार का डिजाइन होगा, कितना मतलब नॉमिनेशन में नोट होगा. एंड कॉइन्स आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई. ये पूरा का पूरा डिजाइनिंग करना, उसका फॉर्म बनाना, सब का सब डिसाइड किया था आरबीआई के द्वारा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल के. तो डिजाइन एंड फॉर्म ऑफ द बैंक नोट्स एंड कॉइन्स आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. Any change in design of the currency note has to be approved by the RBI's central board and central government. RBI के central board और दूसरा central government मिल के ही approve कर पाएगा. Changes in the design of the coins are prerogative of the central government. लेकिन डिजाइन कोइन का बदलाव, कोइन में कुछ बदलाव करना हो तो वो तो भारत सरकार के हाथ में है. सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 गिव्स द आरबीआई सोल राइट, मतलब एक अधिकार देता है, इशू द बैंक नोट्स इन इंडिया. लेकिन सेक्शन 25 कहता है कि डिजाइन, फॉर्म, मटेरियल ऑफ द बैंक नोट्स शेल बी सच मे बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक आफ्टर कंसल्टेशन रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट. ठीक है, कंसल्टेशन जरूरी है, भारत सरकार ही निर्धारित करती है, लेकिन कंसल्टेशन जरूरी है. आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट क्या है ये? करंटली हेडेड बाय डेप्यूटी गवर्नर आर रवि शंकर. तो इसका जो करेंसी मैनेजमेंट का जो हेडेड होता है वो डिप्टी गवर्नर होता है. हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द कोर फंक्शन ऑफ करेंसी मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू द आरबीआई वेबसाइट, डिपार्टमेंट addresses policy and operational issue relating to the designing of the bank notes, forecasting demand for notes and coins, ensuring smooth distribution of bank notes and coins throughout the country, and retrieval of unfit notes and uncurrent coins from circulation, ensuring the integrity of banks notes, etc. Consider the following statements.
Coinage Act 2011 gives the central government the power to design and mint coins in various denominations. Coinage Act 2011 gives the central government the power to design and mint the coins in various denominations. All of the India's currency note printing presses are owned by the central government of India. The first bank note issue in independent India was 1 rupee note that replaced the portrait of the King George with the symbol of lion capital of Ashok Pillar at Sarnath. Which of the following statement is correct? I think 1 and 2 is correct absolutely. Let's see. B is the right number and 3 is correct. कॉइनेज एक्ट 2011 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है डिजाइन और मिंट करने का जितने भी प्रकार के कॉइन्स का डिनोमिनेशन हो तो जितने भी मतलब मान मूल्य के कॉइन हो सबका डिजाइन कौन करेगा छपाई उसका मतलब ढलाई कौन करेगा तो सारा का सारा भारत सरकार के ऑर्डर पे होगा और इसके लिए कॉइनेज एक्ट है 2011 का इन द केस ऑफ कॉइन्स द रोल ऑफ द आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स मतलब आरबीआई का सिर्फ लिमिटेशन उसको बांटना है बस दैट आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार जो भी उसको मनी दे देगी छाप के बना के उसको सिर्फ मतलब मार्केट में लाना आरबीआई का रोल है बाकी कुछ रोल नहीं है गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स टू बी मिंट कितना छपाई होगा कितना ढलाई होगा सब भारत सरकार निर्धारित करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंट्स रिसीव फ्रॉम द आरबीआई ऑन द अर्ली बेसिस द सेंट्रल बैंक्स सेज coins are minted in four mints owned by the government of India. मुंबई में है हैदराबाद में है कोलकाता में और नोएडा में है मुंबई हैदराबाद कोलकाता नोएडा यहाँ पर कोइन का ढलाई होता है टू ऑफ द इंडियाज करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस एक नासिक और देवास में है और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो रोल है या फिर कह सकते हैं भारत सरकार ओन करती है दो प्रिंटिंग प्रेस एक नासिक में दूसरा देवास में लेकिन ध्यान रहे दो गो और भी जो मैसूर और सालबोनी में है उसको आरबीआई ओन करती है थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड मैसूर और सालबोनी में जो है उसको आरबीआई के द्वारा ही ओन किया जाता है अशोक पिल्लर बैंक नोट्स पहला बैंक नोट इशू किया गया था आजादी के बाद 1 रुपया का था 1949 में while retaining the existing design the new bank notes placed the portrait of the King George with the symbol of lion capital of Ashok Pillar at the Sarnath in watermark window इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की ओर चलते हैं मार्बल समटाइम्स seen in news is related with what मार्पोल कन्वेंशन समुद्री पर्यावरण किससे किससे जुड़ा हुआ है मार्पोल कन्वेंशन पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स या ऑफ कोर्स मार्पोल इज ए IMO's इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स लिखा हुआ है तो प्रिवेंस ठीक है It has regulation on prevention of pollution by garbage, which prohibits the discharge of plastics, including fishing gear, into the sea from ships. ऐसा नहीं है कि शिप में लोड करके ले गए और समुद्र में डाल दिए गंदा चीज ये मार्पोल कन्वेंशन मना करता है और लीगली है भैया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट शेल्टर बेल्ट्स इज मेथड of soil conservation where the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter which acts as a shelter to plants. Mulching is practiced in the coastal and dry region in which row of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. Mulching ये है
दोनों ही गलत है। मल्चिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें सोइल को कंजर्व किया जाता है, जिसमें कि बेयर ग्राउंड जो होता है ना बिटवीन द प्लांट्स, where ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw, मतलब से स्ट्रो से उसको ढकना पड़ता है, बेयर ग्राउंड को, ठीक है, ढकना पड़ता है। इट हेल्प्स टू रिटेन द सोइल मॉइस्चर, वो मल्चिंग है। शेल्टर बेल्ट्स इज अ मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन। शेल्टर बेल्ट मिट्टी की संरक्षण या कह सकते हैं कि जो क्षारण होता है उसको रोकने के लिए, खास करके कोस्टल और ड्राई रीजन में ऐसा किया जाता है, जिसमें कि rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। और इसमें पंक्तियों की एक श्रृंखला, पेड़ों की पंक्तियों की श्रृंखला जो है चेक बैंड के रूप में, ताकि हवाओं का झोंका जो हो मिट्टी को उड़ा न ले जाए कोस्टल एरिया से और ड्राई रीजन से, ठीक है। यह है शेल्टर बेल्ट्स। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज आर established अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसी का गठन, दूसरा नेशनल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, तीसरा है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्या क्या गठन किया गया? एनटीसीए, जू जू अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दिस एक्ट प्रोवाइड्स for the protection of the country's wild animal, birds and plant species in order to ensure environmental and ecological security. Among other things, the Act lays down restriction on hunting many animal species. This provisions paved the way for the formation of Central Zoo Authority. This is the central body responsible for the oversight of zoos in India. It was established in 1992. National Board for Wildlife was constituted as a statutory organization under the provisions of this act. This is an advisory board that offers advice to the central government on the issue of wildlife conservation in India. The act provided for the establishment of the National Tiger Conservation Authority. It is a also a statutory body, state, statutory body, सीधा सीधा स्टेचुटरी बॉडी बोलो या फिर वैधानिक विकार, लीगल बॉडी और द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आता है, विद एन ओवरऑल सुपरवाइजरी एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट परफॉर्मिंग कैपेसिटीज as given the act. Answer the following statement. In India, entry into forest is governed by the Indian Forest Act 1927. Entry into the forest is governed by the Indian Forest Act 1927 and Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act empowers the Chief Wild Warden of a state to frame laws for tourists entering protected area. मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने जो चीफ वाइल्ड वार्डन होता है उसको एक तरह से पावर दे दिया है, वही कानून बनाएगा किन लोगों को घुसने देना है, कैसे देना है। काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड वेस्ट बंगाल। नो नो नो, तीन गलत है, एक और दो सही है। इन इंडिया में देख लीजिए, किसी भी जंगल में घुसने के से पहले इंडिया में जो फॉरेस्ट में दो कानून लागू होता है, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, ये ऑल रिजर्व करता है फॉरेस्ट को। फर्स्ट जो है वो अब रिजर्व फॉरेस्ट एंड बार्स ट्री पासिंग everyone other than people who live in the village inside reserve forest needs permission from the divisional forest officer concerned for entering this forest for any purpose। अगर आप इस जंगल में घुस रहे हैं तो जंगल से पहले आपको
फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर से ऑर्डर लेना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट empowers the chief wild warden of the state to frame laws for the tourist entering. प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है यार? सेंचुरी, नेशनल पार्क्स। अंडर द सेम एक्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 1972 एक्ट के तहत ही एनटीसीए के पास पावर है, सेट रूल्स फॉर टाइगर रिजर्व्स। काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये आसाम में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सी वाटर इज नॉर्मली अल्कलाइन कहाँ से हो जाएगा? सोच लीजिए, अल्कलाइन है कि एसिडिक है। There is a strong correlation between accelerated rate of melting of Arctic ice and rate of ocean acidification. चलिए, नॉर्मली अल्कलाइन तो है ही नहीं, आपको पता होगा ना, चाहिए अल्कलाइन ही होता है। A team of research has flagged the changing chemistry of the western region of the Arctic Ocean. After discovery, acidity levels increasing 3 to 4 times faster than ocean waters elsewhere. The team also identified a strong correlation between the accelerated rate of melting ice and rate of ocean acidification. Scientists have predicted that by 2050, 2050 के आते आते तक, Arctic sea ice in this region will no longer survive the increasingly warm summer. As a result, ocean's chemistry will grow more acidic, creating life-threatening problems for diverse populations of sea creatures, plants, and other living things that depend on healthy ocean. Seawater is normally alkaline, having pH 8.1. The point to sea ice melt as the key mechanism to explain the rapid pH decreases because it changes the surface water in three primary ways. पहला, water under the sea ice. Water under the sea ice which had a deficit of carbon dioxide now is exposed to atmospheric carbon dioxide and can take up it freely. Seawater mixed with meltwater is light. Seawater mixed with meltwater is light and can't mix easily into the deeper waters, which means the carbon dioxide is concentrated at the surface. Meltwater dilutes the carbonate ion concentration in seawater, weakening its ability to neutralize the carbon dioxide into bicarbonate and rapidly decreasing ocean pH. Which of the following restriction can be put under the Credit Responses Action Plan? GREP. Thank you. बाद में बात